Good morning, student. How are you? Hope you are doing well over there. So, welcome to another important topic that is connected to soft skill development. And the name of the topic is harassment. Okay. So, now today we are going to discuss very sensitive topic. Okay. And the name of the topic is harassment. It is very serious topic and very sensitive topic. So, uh, having genuine information on harassment will bring clarity and ability to cope, to understand harassment and its type, how is how it is work, its impact on your on physical on physical ability, its impact on your emotional well-being. So overall on your life. So today topic is harassment. Now we are going to understand what is harassment. Harassment refers to any unwanted or undesirable human behavior. हरासमेंट क्या होता है? हरासमेंट नाम तो सुना ही होगा आपने कि इसने मेरा हरास इसने मुझे हरास किया है. ओके, मैंने इस पे हरासमेंट का केस डाला. ओके, सो हरासमेंट एक्चुअली होता क्या है? एनी अनवांटेड और अनडिजायरेबल ह्यूमन बिहेवियर. ओके, ऐसा बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर अनवांटेड होता है या अनडिजायरेबल होता है. Okay, we don't like such behavior. Okay, we don't want such behavior. Okay, उससे क्या होता है? That cause physical and emotional pain. Harassment refers to any unwanted or undesirable human behavior that cause physical and emotional pain. Harassment से क्या होता है? Physical and emotional well-being पे impact गिरता है negative, and that causes pain. Okay, negative impact, एंजाइटी फील हो सकती है, इनसिक्योरिटी फील हो सकती है. सो फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा या सीखा है, हरासमेंट क्या होता है? एक अनवांटेड एंड और अनडिजायरेबल ह्यूमन बिहेवियर होता है. देन फिजिकल पेन कैन इंक्लूड. ओके, फिजिकल पेन क्या हो सकते हैं? हेडेक, स्टमक एजेस एंड sleep disturbances, while emotional pain can range from anxiety and depression to decline in self-esteem. Okay, so indirectly harassment का impact इतना negative होता है कि अपना it impacts self-esteem, means it impacts self-respect of a person because it creates physical pain and emotional pain. Okay, so indirectly harassment contributes to decline or decrease in self-respect or in decrease or decline in self-esteem. This impact can be very significant, affecting mental health, okay, job performance and personal well-being. ये impact इतना deep होता है कि ये mental health को disturb करता है, इंसान के mental health को disturb करता है, उसका job performance, उसका जो professional life डीपली इम्पैक्ट होता है, निगेटिव इम्पैक्ट गिरता है. और जो पर्सनल वेलबींग होता है या उसकी पर्सनैलिटी होती है वो भी निगेटिवली डिस्टर्ब होती है टोटली हरासमेंट से, बिकॉज हरासमेंट इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है सेल्फ रिस्पेक्ट को. उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कम हो जाता है इनडायरेक्टली. सो रिमेंबर ऑलवेज, harassment is a very sensitive and very serious issue because if we ignore it, we deny it, it create or it disturb whole life, it spoil your life because it indirectly has a negative impact on your well-being. It totally destroy your self-respect. Okay. Then if someone is abusing, insulting or otherwise harming you on a regular basis, it's called harassment.
ओके, एक्चुअली हरासमेंट क्या, ये तो पढ़ा है या सीखा है कि हाँ, हरासमेंट मीन्स अनवांटेड बिहेवियर होता है, ह्यूमन बिहेवियर होता है, जैसे फिजिकल पेन या इमोशनल पेन होता है। बट इफ समवन इज अब्यूजिंग, अब्यूजिंग मीन्स कुछ गलत कहता है, ओके, वर्बली, फिजिकली, ओके, इंसल्ट करता है ऑन अ रेगुलर बेसिस, इंसल्टिंग विदाउट एनी मिस्टेक और इंटेंशनली वो इंसल्ट करता है आपका, इंटेंशनली, ओके, देन हार्मिंग यू, आपको तंग करता है, ओके, ऑन अ रेगुलर बेसिस, इंटेंशनली, ओके। हरासमेंट का जो हरासमेंट का प्रोसेस है उसमें इंटेंशनली important है, बिकॉज इफ समवन इज intentionally abusing you, intentionally insulting you, intentionally harming you on a regular basis, actually it is harassment. He is harassing you so that it can impact your self respect, okay. Indirectly he is impacting your life, he is spoiling your life, because if someone is intentionally abusing you, insulting you or harming you consistently, and it creates disturbance, so such condition is called harassment. Harassment is a form of discrimination, okay. Harassment is a form of discrimination, means inequality. It happens when someone experiences unwanted, offensive or humiliating comments or behavior. हरेसमेंट डिस्क्रिमिनेशन भी होता है जब कुछ ऑफेंसिव या इंसल्टिंग कमेंट्स या बिहेवियर ऑन अ डेली बेसिस, रेगुलर बेसिस पे कहा जाता है या किया जाता है, उसे भी हरेसमेंट कह सकते हैं। हरेसमेंट is a very dangerous behavior, vexatious behavior, okay, means dangerous behavior that involves repeated hostile and unwanted word, okay. हरेसमेंट एक डेंजरस बिहेवियर होता है, ओके, अनवांटेड बिहेवियर होता है, वर्ड्स होते हैं, इंटेंशनली ऐसे एक्शन जो पेनफुल होते हैं, हर्टफुल होते हैं, अनोइंग होती है, इंसल्टिंग होती है, ओके, डेंजरस होते हैं। सो हरेसमेंट इज, दैट्स व्हाई हरेसमेंट इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ हरेसमेंट। फर्स्ट इज सेक्सुअल हरेसमेंट, second is verbal harassment, third is power harassment, fourth is person harassment, fifth is physical harassment, sixth is psychological harassment, seventh is discriminatory harassment, okay. First, sexual harassment, okay. This consists of inappropriate touching, sexual comments, request for sexual favor or physical conduct of a sexual nature, okay. Sexual harassment means in workplace or in personal life, inappropriate touching, ओके, सेक्सुअल कमेंट्स होते हैं या सेक्सुअल फेवर का रिक्वेस्ट किया जाता है इन एक्सचेंज ऑफ सम बेनिफिट, और एनी फिजिकल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर that contributes to sexual harassment. Sexually, that person is taking advantage, okay, he is harassing you by inappropriate touching or sexually commenting or requesting for sexual favor on a regular basis. Actually, it's create tension, okay, it decrease or decline your self-respect, okay. In such way it creates sexual harassment, okay. Such type of uh, process or such type of um, sexual comments or inappropriate touching or any favor or any type which can create tension in your physical ability or emotional ability, okay, it called harassment. So you have to understand the type. We have to understand
the process of harassment, how it take place. Okay. Then verbal harassment. Verbal harassment means it consists of using language to insult or demean another person. It can include name calling, insult, threats or offensive joke. Verbal harassment. Verbal harassment means क्या होता है कि ऐसे लैंग्वेज का यूज किया जाता है जिससे आगे वाले का इंसल्ट इंटेंशनली, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है इंटेंशनली। ओके। थ्रेट्स, धमकी दी जाती है इंटेंशनली। ऑफेंसिव जोक्स, उस पे जोक्स क्रैक किए जाते हैं इंटेंशनली। वर्बल हरासमेंट, ओके, लैंग्वेज का यूज किया जाता है। पर्सनल हरासमेंट, on it works on personal level which consists of unwanted and repeated action to degrade or humiliate. Personal harassment means friend circle, अपना फ्रेंड ग्रुप होता है या फैमिली में फैमिली मेंबर्स, कोई की फैमिली मेंबर्स ऑन अ पर्सनल लेवल ऐसे कुछ बात या ऐसा कुछ बिहेवियर कंटिन्यूसली प्रोसेस किया जाता है कि जिसकी वजह से ड्यू टू सच बिहेवियर आपका जो इमोशनल वेलबींग है वो डिक्रीज होता है या आपका सेल्फ रिस्पेक्ट डिक्रीज होता है। पावर हरासमेंट, दिस form of harassment involves using a position of power to control or exploit another person. Power harassment means या इन वर्क प्लेस जो आपके सुपीरियर होते हैं, सुपीरियर अथॉरिटी होती है, कभी कभी ऐसे लोग जो एक हायर पोजीशन पे रहते हैं वो अपने पावर का मिसयूज कर सकते हैं, ओके, टू एक्सप्लॉइट अनदर पर्सन, वो भी वन ऑफ द फॉर्म ऑफ हरासमेंट है। फिजिकल हरासमेंट, दिस कैन बी पुशिंग, हिटिंग और एनी अदर फॉर्म ऑफ फिजिकल टॉर्चर, ओके। Physical harassment means intentionally pushing or hitting or any other form of physical torture. Okay. Psychological harassment means destructive criticism. Feedback, ऐसा feedback दिया जाता है जो destructive होता है, जिसका फोकस इम्प्रूवमेंट पे नहीं होता है, जिसका फोकस इंसल्ट पे होता है। ओके। सोशल आइसोलेशन, ओके, सोशल आइसोलेशन मीन्स उसे आइसोलेट किया जाता है, उसे इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। ओके। वी पुश अवे, ओके, so that contributes to psychological harassment. Discriminatory harassment means inequality, discrimination based on race, gender, region or disability. It involves offensive comment or unfair. In workplace, this type of harassment takes place. Okay, जब जेंडर, रिलीजन, इनके बेसिस पे जब हरास किया जाता है, ओके, ऑफेंसिव वर्ड्स, ऑफेंसिव कमेंट्स पास ऑन होते हैं, तो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन का प्रोसेस टेक्स प्लेस और इससे हरासमेंट क्रिएट होता है। सो इट इज वेरी serious in workplace also as well as in your personal life.